लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है विथ मॉइस्चराइजर एंड लिप बाम। सो मैंने आज अप्लाई किया है डव की नरिशिंग लिप बाम, इट्स वेरी नाइस एंड द मॉइस्चराइजर इज जॉय मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। Foundation on my face. So this is Maybelline New York Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation, and yes, this is a full coverage foundation guys. So ये dry to oily skin सबके लिए है। तो dry skin में आपको थोड़ा सा ज़्यादा moisturize करना होगा face को, that's it. So my shade is 128 Warm Nude and this is a perfect match. Has covered all my little bit dark spots and some shadows and darkness around my eyes and every pigmentation. So मैं extra concealing नहीं करूँगी because सब कुछ अच्छे से cover हो गया है। मैं थोड़ा सा highlight करूँगी मेरी under eyes, मेरी center of the face को। So for that I'm going to use this NYX Can't Stop Won't Stop concealer. This is in the shade medium olive and this is a yellow tone concealer. So ये आपके under eyes को अच्छे से ब्राइटन अप करता है। मेकअप सेटिंग स्प्रे लूंगी, आप कोई भी ले सकते हो। मैं आज यूज कर रही हूँ NYX की मैट फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे। क्योंकि समर है सो आई प्रेफर मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा स्प्रे कर लूंगी मेकअप सेटिंग स्प्रे को। देन आई एम गोइंग टू डैब ऑन माई फेस लाइक दिस। तो इससे हमारी जो बेस मेकअप है वो अच्छे से सेट हो जाती है। सो आप जितना भी ज्यादा स्वेटिंग करो, कुछ भी करो, इट नॉट गोइंग टू बल्ज। जैसे आपने अप्लाई किया था उस तरह से आपके फेस में ये बैठ जाएगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई फेस विथ Maybelline Fit Me लूज पाउडर। दिस इज द शेड 20 लाइट मीडियम एंड दिस इज माई शेड।
फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस इनसाइड आईब्राउ पेंसिल, जिसकी एक तरफ आईब्राउ पेंसिल है एंड दूसरी तरफ स्पूली है, सो इट्स वेरी इजी टू यूज. ब्राउज मैं स्पूली में थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे को स्प्रे करके मैं ब्राउज को कोम कर लूंगी. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू माई आई मेकअप. तो मैं आज यूज कर रही हूँ हिलरी रोडा की दिस पैलेट. सो इसमें मैट एंड शिमर दोनों आई शेडोज है. फर्स्ट आई एम गोना टेक दिस वायलेट कलर विथ अ फ्लैट आई शेडो ब्रश. थोड़ा सा पैट कर लूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल ओवर माई आईलिड. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड, दिस लैवेंडर शेड, पैट एंड क्रीज में मैं दिस वाले शेड के साथ मिक्स कर लूंगी. Then I'm taking this shade and I'm going to just blend the edges of the lavender shade. ये बेबी पिंक शेड को पिक कर लूंगी and I'm just gonna blend it all together. Then I'm going to apply this shade on my lower lash line. And then the dark violet shade just on my outer lash line. Next मैं Nykaa की ब्लैक मैजिक काजल यूज कर रही हूँ फॉर अ स्मोकी आईलाइनर. apply white kajal on my waterline. Next from this beauty glazed color board palette, मैं इसमें 4 शेड्स की पैलेट है. तो ये पैलेट की फुल रिव्यू एंड स्वॉचेस मेरे चैनल पे है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको यहाँ पे आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इसमें है दिस ब्यूटीफुल, हाउ आई शो यू, ओके लेट मी शो यू लाइक दिस.
So this beautiful violet color glitter, so this beautiful violet glitter, तो इसको ही मैं फिंगर के हेल्प से पिक करके मेरी सेंटर ऑफ द आईलिड में मैं अप्लाई कर लूंगी. So this is Essence Super Volume Mascara, and this is a waterproof one. अब मस्कारा लगा के ही ये जो आई मेकअप है इसको कंप्लीट कर सकते हो, बट आई एम गोना यूज दिस फॉल्स आईलैश. सो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. इफ यू वांट यू कैन यूज दिस और जस्ट कीप दिस लाइक दिस. तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो इट्स योर चॉइस. So now my eye makeup is complete, guys. So let's finish the rest of my face makeup. So first I'm going to do some contouring. So for that I'm going to use this NYX contour palette, and there I'm gonna use this darkest shade for my contour. I'm going to use this Shivana color ultra blush palette, and there I'm going to use this shade for my blush. सेम पैलेट से ही ये जो एक ब्यूटीफुल रोज गोल्ड सिल्वरी हाइलाइटर शेड है इसको पिक करके मैं अपने फेस को हाईलाइट कर दूंगी. To apply makeup setting spray, वही same NYX की matte makeup setting spray to just blend all powdery makeup and set my makeup for a long time. Wet n Wild की liquid lipstick है in the shade Rebel Rose. So this is a mauvish nude. So
लेट मी नो गाइस कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा है, एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon. So guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Till then, bye.